Welcome to BIOMUTANT. तो आ गए आप लोग। स्वागत है आपका अनदर एपिसोड ऑफ बायोम्यूटेंट। तो चलो करते हैं गेम को शुरू। तो पिछली बार हमने जंबो पप को मार दिया और इस ट्री के एक रूट को बचा दिया है। बैक टू द रूट्स, फाइंड द नैनो। नजदीक है, चलो उसको ढूंढ के आते हैं। इधर है, इधर से कुछ तो। और ये Right between the eyes. Who could stand against that? Chop, chop. मर गए साले। हम कहाँ पे हैं? ओके। चलो वो नैनो को ढूंढेंगे आज। Nice shot. अरे हमारा नहीं है, जिंदा है। All fired up. ये भी मर गया और लेवल भी बढ़ गई। खतरनाक। चलो That's an intact plant hut over there. Wonder what's growing in it. A smart foe would leave now. अरे किधर है? तेरे माँ का साकिना का। और कहाँ उड़ रहा है तू? नीचा।
कौन मार रहा है बे मुझे? Sharp steel. That's the stuff. You're in pain. Bullets everywhere. और उसके नजदीक गए तो पूरा हेल्थ कम हो जाती है। जाइला यहाँ पे क्या है? That looks like the inputters need to be linked to get the mind monitor to boot up. Just a few moves left. Make them count. It's mind over matter, software over hardware. Success is peace of mind. ओके ओके। और ये तो मर गया यहाँ पे, सोते सोते मर गया। फाइंड द नैनो। क्या यही नैनो है? नैनो तुम मर कैसे गए? नैनो तुम नहीं मर सकते। अरे नहीं नहीं, ये नैनो नहीं है, नैनो उधर है। नैनो 20 सेंटीमीटर इतना नजदीक है, कहाँ गया नैनो? Go on, catch it. That's sure to be useful. मिल गया मिल गया। Return to the root. Okay. फिर से कहाँ आ गए? इनको तो मारा था मैंने। Oh,
यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करके जाएंगे उधर। यहाँ पे कुछ तो मिल रहा था। There's a serenity about this spot. It's a place for rest and recovery, when day can become night, and the other way around. ओके, तो ऐसी जगह पे मैं आराम कर सकता हूँ। कौन है रे? तेरे माता साकी नाका। ये पोस्ट है। चलो आजा मेरी सवारी। This thing needs new bound sorbers. Feels good. ओके, हो गया अपग्रेड। Oh no. बैक टू द रूट। वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं क्या हम? नहीं। चलो, मेरे पास टाइम नहीं लड़ने के लिए। ये अटक गया ऊपर। उधर जाने के लिए रास्ता किधर से? चल आज तक। Move before it decides to have lunch. इधर से रास्ता है।
इसको कर दिया रूट को हमने जिंदा। रिटर्न टू द आउट ऑफ डेट। मैप में देखते हैं अब क्या है मिशन। आउट ऑफ डेट के पास जाना है। Let's see. This won't be a field trip. It's the real thing. Gizmo will always make time for you. Says there's an interesting place nearby that no one knows about, but doesn't really want to talk about it right now. Cheery about you finally meeting Goop at the Subnautica station. Says you'll meet again. Gizmo will always make time for you. Has plenty to do, so no worries. तो हो गया है वो मिशन कंप्लीट हमारा। तो हमने ट्री ऑफ लाइफ को थोड़ा बहुत बचाया है। अभी देखते हैं मैप में। Let's see. तो चलो हमें इधर जाना है। कहाँ पे? जंबो पक्स को हम अगले एपिसोड में मारेंगे। पहले हम करेंगे किधर जाएंगे? अरे ये ट्रैक क्यों नहीं हो रहा? रिटर्न टू आउट ऑफ डेट। इधर हमने एक भी मूत्र विसर्जन नहीं किया, इसलिए हमें अब वहां पे ट्रैवल करते जाना पड़ेगा। इधर किधर हमने फ्लैग ही नहीं ढूंढा, इसलिए वहां पे डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हम। तो The perfect place for a fight. चलो ये गधा है का घोड़ा है वो लेके जाते हैं। क्या है क्या मालूम। दो 1000 किलोमीटर है वो, मीटर मतलब 2 किलोमीटर दूर जाने का। ओके हम किसी से नहीं लड़ेंगे, डायरेक्ट उधर जाएंगे क्योंकि जर्नी बहुत दूर है। That's a Jagni tribe outpost. अरे इधर से तो रास्ता बंद है। मैप में देखते हैं, यहाँ पे है हम। गिर गए।
जंगल जंगल से जाएंगे। Watch your balance. मेरा पोस्टपेड कलेक्शन है, मेरे को बैलेंस की जरूरत नहीं। That ruin could still be something in it. Never. You need to give the tensioners on the machine head a matching adjustment to get the twing twang in tune. Okay. Yes. That sounds delicious. You're full of pluck. इसको मारना पड़ेगा, चलो। Someone has to end this plague before it's too late. Cutting edge. ओके, कर दे उनका काम खलास। कहाँ गया हमारा वो गधा या घोड़ा? Sharp steel. मर गया साला। This one seems to be in good spirits despite being left here for dead. Has heard that you only follow your own personal code and is worried you've lost your respect for life. Asks you to do the right thing for the sake of your conscience. It's only through your inner conflict you're held accountable for your actions. Seems happy, but surprised you chose to turn this disaster into a blessing. Come toward the light. Slow down. Why would you rush in? When you see what you want, why wait? Well, what about being careful? Pah! Poppycock! Full speed ahead! ओके, अच्छा काम किया हमने। उसको बचा के हमने अच्छा काम किया है।
चलो चल के मिलते हैं आउट ऑफ डेट को। कहाँ गया हमारा गधा? Doesn't riding a beast like this feel good? चलो आउट ऑफ डेट आ रहा हूं मैं। इधर क्या है ये? चड्डी बनियान मिल रहा है यहाँ पे तो। किधर गया हमारा गधा? अरे गधे इधर आ। घोड़ा है या गधा है कुछ समझ में नहीं आ रहा ये। ओहो, चलो डायरेक्ट आउट ऑफ डेट के पास। ये शायद पटरी वहां पे जाती है, तो चलो चलते हैं। लड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है मेरे को। आउट ऑफ डेट के पास जाना है। Wonder where we can get some ride shoes for the mount. मैंने उसका ऐसे गिरा दिया यहाँ पे। यहाँ से कूद पाएगा क्या? हमको इधर जाना है, ट्राई करते हैं, चलो। मरता नहीं लेकिन ये बारी है। हमें नहीं लड़ने का। स्लो है, थक गया हमारा घोड़ा। चल रहे घोड़े। ओहो, अरे गिर गया। चल, गधा ही है, घोड़ा नहीं है। There it is, the tree of life. The idea that all life is related by common descent, where the twigs are existing species and those produced in the past represent the succession of the extinct. The tree's great branches were once budding twigs, a connection between the past, present, and future. A representation of all extinct and living species with its ever-branching and beautiful ramifications. We are an evolution of those that came before. वाह, चलो चलते हैं आउट ऑफ डेट को मिलने। The yerp fields, where the echo of your actions resounds clearer than any other place you'll find, except for where that's not Jump. true. खतरनाक है ये, मरता नहीं। इसको बचाना है हमें। ये जो ट्री ऑफ लाइफ है, इसको हमें बचाने का मिशन है इस गेम में पूरा। इसको बचा लिया तो लाइफ चिंगा लाला।
ये भी ले लेते Take this seriously, or it'll take you down. इधर झंडा बिंडा नहीं है किधर? Glad to see some wood scrap there. ओके, ये रहा यहाँ पे एक झंडा, इसकी हमें जरूरत थी। यहाँ पे करते हैं मूत्र विसर्जन। Let's see. ओके, आ गए हम ट्री ऑफ लाइफ के पास। अभी कभी भी आ सकते हैं, बहुत ट्रैवल करना पड़ा मुझे। चलो, It's a place well hidden. It's just below the above. below the above. ये स्पेसशिप है क्या? आउट ऑफ डेट, किधर है तू? हाँ, ये रहा। Out of date's impressed you made it this far, but there's still so much left to do. The end of the world is still on everyone's minds. You've beaten a path where you have the power to destroy or save everyone. Question is, what you'll do with that responsibility. He can sense that your heart beats steadily and acknowledges that the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Thinks it's important that you remember who you are and where you came from. Someone without... He promises he'll be there for you. Just come talk to him beneath the tree if you're feeling lost. Out of date says there's a time for everything. And now there's no use thinking of the past, for it's gone. Think of the present, because that's where you are. It's time to set your priorities as the one who completes things. If you continue to do good, good will follow you. If the world really does end, there won't be anywhere to run. So he's prepared for the worst, something he calls the Ark. Two sides to everything, but for him it would be devastating if you were forced to use the Ark to escape while the world crumbled. Out of date says there's no clear record of the chain of events that changed the course of history and brought the world to its knees. He's found evidence on the Ark, records of a crisis, decades of contamination that permeated the ground and broke its inner core. The contamination disrupted what we now know as Ki energy, the life force that runs through all things, living and inanimate. He's been told the blight affected everything at a genetic level and turned our perception of normality on its head. It was only those that changed that avoided extinction, proving that the possibility for survival and renewal was real. He understands you are curious about the ship at the foot of the tree. He says it surfaced when the oil broke through the ground. The Ark predates the back-in days, and now, after years of study of the manuals he found inside, he believes he's figured the ship out.
The Ark has room for 4 more, even if you think no one else is worth saving if the world comes to an end. Yuba dolo wawa atu awa ya ea. He'll keep the seats open, and you are free to invite up to 4 others to join you in the Ark in the event of a cataclysm. Vunko vuntu valo alo hero. Out of Date says that from what he's heard, you've been busy. Bilia antuf yuba dolo wawa. He says he appreciates what you've done so far, but unfortunately he's got urgent news from his friend Noko in the east. Tuloya voto lola. Out of Date says he knows you're good-hearted enough to do your best to support Noko. Fofo umbak bakwa papamu. He says he'll point you in the right direction, but finding Noko and making sure she gets what she needs is up to you. That doesn't sound good. Out of Date was spot on. The hoof puff needs to be stopped. Oloi bobo paweg. Out of Date says that Noko is worried now that the Eastern World Eater is stepping up its activity. Bobo tuboko. Oloi bobo paweg. He explains that Noko keeps a fabled steed that she has planned to ride out to the World Eater, but needs help to get it prepared. Loma utulu ba yowo. Out of Date suggests that you should head east as fast as possible and see what you can do to help. Ato wamawa. He wonders what's on your mind. Papa mofo bak. Says goodbye to you. ओके, तो कर दी हमने क्लेश। नोको के पास जाना है, तो वो सब करेंगे हम अगले एपिसोड में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करो और Easy for things to hide down here. और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले एपिसोड में हम नोको के पास नहीं जाएंगे। ये जो हमारा वर्ल्ड ईटर है इधर का, ये इसको मारना बाकी है। ईस्टर्न पोर्की पफ, उसको मारना बाकी है। इसको जाके मारेंगे वो, लेकिन वो अगले एपिसोड में। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।